Students appearing for the slot 2 and slot 3 of CAT 2024, please make sure you watch this video. Hello everyone, I'm Ashta and today I'm going to tell you some key points जो slot 1 के analysis से आए हैं and you need to keep them in mind when you go to solve your paper for slot 2 and slot 3. Student reaction से पता चला that the verbal section was the toughest and कुछ format में changes आए where you had more TETA questions, parajumbles बिल्कुल भी नहीं आए, RCs थोड़े से tough थे, दो doable थे, एक tough था, एक economic based था, किसी में interpretation difference थी, किसी में इंटरफेस इशू था. सो ऑल ऑफ यू कीप दिस इन माइंड दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग वर्बल प्लीज अपनी रीडिंग स्पीड थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना. आपके स्लॉट से पहले ट्राई टू रीड सम पैराग्राफ ताकि आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी बढ़े एंड यू कैन सॉल्व योर आरसीज डूएबली. सरप्राइजिंगली द LRDI सेक्शन वाज द इजीएस्ट. बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जिन्होंने पूरे सेट सॉल्व करे हैं एंड दे आर द हैप्पीएस्ट विद दैट सेक्शन. सो जो बच्चे LRDI से घबरा रहे थे, उनकी प्रिपरेशन वहां पे वीक है, the exam format is going to be such that it's going to help you out, so don't worry, stay calm. इन sections में आपको सबसे ज्यादा काम रहने की जरूरत है, so you can choose the right set and start with the right questions. Quant comparatively easier आया है based on CAT 2022 and 2023 का level, but that does not mean कि आप अपने formulas revise ना करके जाओ. हो सकता है आपने इतने difficult questions practice करें कि आप easy questions में silly mistake कर दो. So please try and revise your formulas before you go, ताकि कुछ ऐसे questions भी आए हैं जो direct formula based थे. So make sure that your easier questions are also practiced. Just go through your lists, go through your formulas, and you will be sorted for the quant section. Overall, we can say that the CAT level was much doable, much relatively easy. So there's no need to panic. Have the faith in your preparation, have the faith in yourself. Be very confident. The exam is going to go well. Sirf panic mat karna and make sure that you attempt all the questions correctly. All the best to everyone appearing for the exam and let me know in the comment section below how did your slot 2 and slot 3 go. Bye-bye.